I know one day little Manan is going to grow up, and like every other kid, he'll probably ask me the question कि मैं और मेरे वाइफ मिले कैसे थे? Basically, how his parents met. What was the story? क्या हुआ था? So I'm sure he's going to ask that question one day. And this particular video is for that day. The day he asks that question, I'm just going to play this video, and you all three of us are going to watch it together. 2004 I returned from London, and हम लोग relocate हो चुके थे दिल्ली में from Bombay. दिल्ली का एक हमारे लिए एक अलग ही एक स्पेशली मेरे लिए एक अलग ही एक प्लेस है in my heart. I'm very attached to that place even now. Well, it's pretty obvious because my schooling was in Delhi. मैं वहाँ पे बड़ा हुआ था, I passed out from school in Delhi. So it has a very special place for me, So और वो भी in the 90s. I mean उसकी तो बात ही कुछ और है. So 2004 जब मैं दिल्ली वापस आया, I was of course this young lad. I think I was about 24 or 25-year-old. A lot of confidence. lot of young blood, energy, party loving, fun loving, and जो भी आप कह लीजिए. फ्यूचर उस टाइम पे काफ़ी दूर था, एंड आई वॉज वेरी कंटेंट विद द फैक्ट कि अभी तो मैं बस 24-25 साल का हूँ, अभी तो फ्यूचर बनाना बाकी है, अभी तो लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना है, अभी तो मैं पढ़ के आया हूँ, अभी तो इतना मेहनत करके आया हूँ. सो लेट मी हैव फन विद माई लाइफ, लेट मी एंजॉय. बट हाँ, उसके लिए नौकरी की बहुत ज़रूरत थी. I like in one of my previous vlogs, I very clearly mentioned that I like to spend my own money and not be a burden to anybody, even if it's my parents. So obviously 2004 में आते ही दिल्ली में I started looking around for a job. उस टाइम पे I remember this was probably the month of August. बारिशें हो रही थी. Of course, it's not like in Mumbai, continuous rains नहीं होते, but then that spell of rain in Delhi after so much of heat and humidity is like magical. Normally बारिश होते ही सबके घर में पकौड़े बनना चालू हो जाते हैं, खुशबू हर जगह आपको स्मेल करने को मिलता है, या तो पकौड़े के, या तो समोसे के, या तो जलेबी के, all that. So उसी महीने में when I was in Delhi, we reached Delhi, so मैं नौकरी ढूंढना चालू कर दिया था. उस टाइम पे नौकरी ढूंढने के तरीके कुछ अलग थे आज से. Obviously you had certain websites. I don't remember if we had these job portals at that point of time or not. Maybe we had, but they were not as probably as popular or were in demand in searching a job as was consultants on newspaper ads. So फिर मैं ऐसे ही मैं दोनों ही चीज़ देख रहा था, ऑनलाइन भी देख रहा था एंड न्यूज़पेपर एड्स भी देख रहा था. और न्यूज़पेपर एड्स में मुझे एक जॉब, वेरियस जॉब्स थे, बहुतों में मैंने अप्लाई किया था जिनका कोई रिवर्ट नहीं आया था, बट एक जॉब था विच वॉज थ्रू अ कंसल्टेंट, और मैंने अप्लाई किया था और उनका फ़ोन आया था. एंड हाउ डिड आई गो अबाउट अप्लाइंग इन दैट जॉब. दिल्ली में कुछ हब्स थे उस ज़माने में, आज है कि नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे एक नेहरू प्लेस करके एक जगह है विच आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर ऑफ. वेरी फेमस फॉर कंप्यूटर प्रोडक्ट्स. बट ये जो आउटसाइडर्स हैं ना, जो लोग दिल्ली से नहीं है, उनके लिए नेहरू प्लेस इज़ लाइक अ प्लेस वे यू गेट अ लॉट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल दैट, वो है. पर जो दिल्ली में रहते हैं ना, जैसे मैं, नेहरू प्लेस हैज़ गॉट अ डिफरेंट चार्म ऑल टुगेदर. जो टावर्स है जिसमें पुराने ऑफिसेज हैं, उन टावर्स के नीचे जो आपके छोटे छोटे शॉप्स है, येस कंप्यूटर की शॉप्स भी है, बट उन कंप्यूटर शॉप्स के बीच में एक एक दो फ्रूट जूस के कॉर्नर्स भी है जहाँ पे मैंगो शेक बनता है, बनाना शेक बनता है, और कुछ दुकानों में राजमा चावल भी बेचे जाते हैं, एंड अगेन यू हैव कढ़ी चावल एंड ऑल दैट. सो एक अलग सा एक एटमॉस्फेयर है. और फुटपाथ में आपके सारे शूज़ एंड जैकेट्स एंड ऑल दैट स्पेशली विंटर में लगाई जाती है. सो द एंटायर एरिया हैज़ अ मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट, इट्स गॉट अ डिफरेंट फ्रेग्रेंस ऑल टुगेदर. It's not just about computer products. You can spend hours and hours in Nehru Place. एक बस स्टॉप भी है, it's a bus station, bus depot, whatever you call it.
जहाँ से सारे बसेस आती है, यू नो, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. आप विकासपुरी से कह लीजिए, द्वारका से कह लीजिए, एवरी डैम प्लेस ऑन यू नो इन दिल्ली. और कुछ बसेस वहाँ से फर्दर आपकी बदरपुर बॉर्डर, यू नो, टुवर्ड्स फरीदाबाद जाती है. दैट कमोशन, यू नो, और व्हाई आई एम मेंशनिंग अबाउट दिस बस स्टैंड इज बिकॉज उसका भी एक अलग चार्म है, उसका भी एक अलग स्मेल है ना. आप कभी दिल्ली में गर्मियों में इन द समर्स और इवन फॉर द विंटर्स, यू नो, आप कोई भी बस स्टेशन में जाएंगे ना, बस स्टॉप, जैसे कि ये वाला है जो मैं नेहरू प्लेस के बारे में बता रहा था. अब हम खड़े रहेंगे ना, एंड यू सी, जस्ट लुक अराउंड एंड स्मेल अराउंड, इट्स अ डिफरेंट चार्म. यू हैव दोस, एक पता नहीं किस तरीके की टोकरी टाइप्स होता है जिसमें ना ऐसे राम लड्डूस बेचे जाते हैं, एंड somebody will be selling शिकंजीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ noises, sounds will be coming, people selling this and that. So अलग सा एक फीलिंग आता है, जिसके बैकड्रॉप में आपको टावर्स एंड बिल्डिंग्स होते हैं. तो इस नेहरू प्लेस में कंसल्टेंट्स भी होते थे, अभी भी हैं शायद, आई डोंट नो, ऑफिसेज में. सो HR कंसल्टेंट्स एज दे कॉल देम. तो मैंने जो अप्लाई किया था जॉब का, तो इसी HR कंसल्टेंट ने शायद एडवर्टाइज किया होगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं आ गया. एंड 2004, I'm a 25-year-old man coming back to the city I love most, you know. At that point of time, you know, you can imagine what I was going through. So interview हुआ मेरा. I remember, I think one of the towers में एक बहुत swanky सा ऑफिस था, छोटा सा हालांकि, and they took my details. मुझे मेरा appointment रखा with this organization. I was very excited. This was going to be my first job in the city that I loved a lot. And I'd come back from London to that city after quite a number of years. You know, back to my school days wala life kind of, you know, feeling, jo emotions the. I was very happy, elated. So, उन्होंने मेरा appointment रखा. And this was, I will not take the name of the company, obviously, but I will give you a description of what it was. ये Greater Kailash 1, again a beautiful locality of Delhi. See, I'm just coming. See, GK1, you know, Nehru Place, Connaught Place, South Extension, CR Park. ये जो जगह है ना दिल्ली में, including the West Delhi, I'll come to that in a short period of time. This gives me the real flavors of Delhi. Gurgaon, DLF, I mean, they might be very grand, they might be very beautiful, they might have fantastic infrastructures. I don't know if they do, but at least look at it. They might be having great malls and fantastic, huge palatial houses. But I'm sorry, I mean, Delhi तो मेरे लिए Connaught Place, West Delhi, the entire of West Delhi, South Delhi, of course. These are the places which kind of make me smell जो दिल्ली का एक फ्लेवर होता है, fragrance of Delhi, यही मिलता है. Because देखिए, somebody like me who had come from London, I mean, modernness, swankiness, big cars, swanky cars, and you know, talking in English bakeries and all that did not really appeal to me. I mean, मुझे क्या, that's not going to be attractive for me because मैं उस जगह से हूँ जिस जगह से आप कॉपी कर रहे हैं. You know, so it wasn't really appealing to me. I mean, it's like, you know, you are telling somebody who's driven a Porsche or a Ferrari how fast probably a Baleno or any other Indian cars have, how fast, and you're kind of gloating about it, you know. And this gentleman has already driven a few of the fastest cars in the world. So it's something like that, you know. You kind of telling me how great Gurgaon is. I'm not saying it's bad. It's fantastic. It's nice. But it doesn't appeal to me who had come from London at that point of time. What appealed to me were places like Nehru Place, Chandni Chowk, of course the entire South Ex, Greater Kailash 1, Greater Kailash 2, East of Kailash, CR Park, West Delhi, Janakpuri, you know, Vikaspuri, Tilak Nagar, Jolly Garden. Those were the places, and obviously, without doubt, Connaught Place. So this is what appealed to me. This is what Delhi meant to me, right?
सो आई वॉज वेरी थैंकफुल कि मुझे GK1 में जॉब मिल गया, मतलब मिलने वाला था। इंटरव्यू के लिए गया, GK1 MN ब्लॉक के बीच में। वेरी क्लियरली रिमेंबर, एक छोटा सा बिल्डिंग था, इट्स बंगलो बेसिकली कन्वर्टेड टू अ ऑफिस सेटअप काइंड ऑफ अ थिंग, एंड बेसमेंट में, सो यू टू वॉक डाउन द स्टेयर्स, बेसमेंट में जाके वहाँ पे ऑफिस थे, क्यूबिकल्स थे, एंड मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंड आई गॉट द जॉब ऑल्सो। दैट वाज माई फर्स्ट जॉब इन दिल्ली। Obviously, the money was, I mean, it was a joke compared to what I was earning as a part-timer in London. It was absolutely a serious joke, but I did not mind. ठीक है, I mean, I said future तो आगे है, future तो बना लूँगा मैं। I had that kind of thing. अभी तो मुझे सिर्फ pocket money चाहिए था, and I wanted to kind of set foot into the industry and get my life going about in Delhi. I was staying in a place called Vikaspuri, और विकासपुर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं उस जगह के साथ काफ़ी अटैच्ड हूँ, बिकॉज मेरा जो बचपन है, मेरा स्कूलिंग के टाइम में भी हम विकासपुरी में ही रहते थे। माई फादर्स क्वार्टर्स विद है, और हम लोगों ने थैंकफुली इन दिस सेकेंड स्टेंट इन दिल्ली 2004 ऑनवर्ड्स हम लोग विकासपुरी में ही थे, और उसी अपार्टमेंट थे जिनका नाम ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट्स था, और उसी फ्लैट में ही हम लोग stayed back. I mean, stayed again. And I would take the chartered bus from Vikaspuri all the way down to Nehru Place. एक बस आती थी स्पेसिफिकली जो आई थिंक रिंग रोड होके जाती थी, एंड रिंग रोड से आपका नेहरू प्लेस जाने के लिए वो लेडी श्री राम कॉलेज के सामने से जाती थी, एंड आई यूज्ड टू गेट डाउन एट लेडी श्री राम कॉलेज एंड आई वॉक डाउन और टेक अ रिक्शा टू माई ऑफिस. It was very cheap at that, in those days. 10 rupees या 15 रुपये, इन दोनों में से अमाउंट आई डोंट रिमेंबर, बट नथिंग बियॉन्ड 15. So it was either 10 rupees or 15 rupees, which जो चार्टर्ड बस यूज टू टेक, उसको दफ्तर जाने वाली बसें कहते थे उस टाइम पे. और रिक्शा लेडी श्री राम से मेरा ऑफिस तक it would take about another 10 bucks, so 20-25 odd bucks one way sorted out. और उसी दौरान आई परचेज माई फर्स्ट सेकेंड हैंड थर्ड हैंड कार एज वेल. इट वॉज अ 1998 डिलक्स मॉडल की मारुति 800 कार थी. आई वॉज अ थर्ड ओनर ऑफ इट. वॉज नॉट रियली इन ग्रेट कंडीशन, बिकॉज बाद में परचेज करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ दैट फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टच द डोर ऑफ इट, मुझे शॉट मारता था, स्टैटिक काइंड ऑफ अ थिंग. इस तरह की छोटी मोटी ग्लिचेस थी, बट नेवरदलेस that was my golden chariot, and I was very happy about having that car. So things became even better. Anyway, I was earning a little bit of money. My career had slowly started to take off. जितना पैसा मैं थोड़े बहुत earn करता था, that was sufficient to pay my EMI of the vehicle. गाड़ी का फ्यूल के लिए सफिशिएंट, एंड जो भी मैं थोड़ी बहुत मस्ती मुझे अच्छा लगता था करने के लिए, मूव अराउंड इन दिल्ली एंड ऑल दैट इन द कार वाज एब्सोल्युटली बीइंग फंडेड बाय दैट सैलरी. आई वाज इन द सेवेंथ ऑफ हेवन बिकॉज आई वाज इन अ सिटी इन इंडिया विच आई लव्ड. बचपन मेरा वहीं पे गुजारा था. आई हैड लॉट ऑफ मेमोरीज. आई वाज बैक इनटू दैट सिटी. आई वाज वर्किंग देयर. माय फर्स्ट जॉब वाज इन दिल्ली. आई हैव अ कार नाउ जो मेरा खुद का है. एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि एट दैट एज एंड स्टेज आई डिड नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी. फ्यूचर तो बहुत आगे है, मुझे अभी बनाना है फ्यूचर. आई वॉज जस्ट 24 or 25 year old, carefree. So life was full of fun and masti. So my day would be like मैं घर से विकासपुर से ऑफिस जाता था GK1 में. ऑब्वियसली आई हैड अ कार, सो आई वुड नॉट ड्राइव डाउन टू GK1, फ्लॉन्टिंग इट. फिर ऑफिस ख़त्म करने के बाद आई वुड हिट आउट टू द नियरेस्ट थिका, नॉट एवरी डे, आइडियली ऑन अ वीकेंड, फ्राइडे या सैटरडे को. एंड जो नज़दीकी ठेका से आई वुड बाई 2 bottles ऑफ बियर. आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, इट वॉज ईदर ए हेवर्ट्स 5000 और इट वॉज अ किंगफिशर, जो बड़ी वाली बॉटल होती थी. इट वॉज वेरी चीप ऑन दोस डेज. कुछ 55 या 45 रुपीज़ के बियर आते थे. आई थिंक 55 रुपीज़ वॉज द स्ट्रॉन्ग बियर
एंड जो 45 रुपीज़ का था दैट वाज द लाइटर बियर. सो मैं 2 बॉटल नॉर्मली खरीदता था एंड साथ में जो रेगुलर दिल्ली वाला चखना, यू नो, इट वुड बी तंदूरी चिकन और प्रॉब्ली चिकन टिक्का मसाला, नॉट मसाला, चिकन टिक्का एंड समथिंग लाइक दैट, यू नो, एंड पीनट्स ऑफ कोर्स. 2 चेयर जो गाड़ी के थे सामने के, उसके बीच में जो हैंड ब्रेक वाली जगह होती है, वहाँ पे मैं अपना पेपर का जो प्लेट है उसमें ये सारे चखने वखने डाल के बैलेंस करता था. Now Maruti 800 was a smaller vehicle, so साइड में बॉटल्स रखने के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं थी. So I would ideally keep the bottle, जो ओपन बॉटल थे, between my legs, thighs के बीच में उसको प्लेस करता था. And I would park my car in a nice quiet place. Relax. I would see the world go by. I would see people moving around. I'll see everything that was happening around, and I was sipping my beer and I was having the chicken in my own car and with the music of my choice. तो गाना सुन सुन के मैं चारों तरफ देखता रहता था and I would just see the world going by. And August onwards, September and then the inset of October जैसा महीना आना चालू होता है, आपके जो शैडोज होता है ना, दिल्ली में स्पेशली लंबे होने लगते हैं. द मोमेंट यू क्रॉस आफ्टरनून, आपके शैडोज लंबे हो जाते हैं. हवा में थोड़ी सी चिल आना चालू होता है, स्पेशली टुवर्ड्स अक्टूबर, एंड देयर इज अ स्ट्रेंज ब्यूटीफुल स्मेल विच इज काइंड ऑफ, यू नो, यू आर एनगल्फ्ड अराउंड. वो आप मार्केट प्लेसेस में जाएंगे तो आपको चाय की स्मेल आती रहेगी, अदरक वाली हल्की हल्की, पकौड़े की स्मेल आती रहेगी, समोसे की स्मेल आते रहेंगे. सो यू आर नॉर्मली सराउंडेड बाय ऑल दिस काइंड ऑफ स्मेल्स एंड ऑब्वियसली द चिकन्स एंड टिक्कास के स्मेल भी आते रहेंगे. एंड जैसे जैसे आपके विंटर प्रोग्रेस होता है, एज यू गो फर्दर स्लोली इंच टुवर्ड्स December, then obviously all the smells are even more, you know, the chicken तो हर जगह आपको दिखता है. And the activities of the people will also change. तो आप नॉर्मली जैसे जैसे आपका बारिशें ख़त्म होती है and you are heading towards winter, you see people huddling around those चाय की टपरीज में, they either smoking and having a chai in their hand. People from all वर्ग, age, whatever you call them, young, old, so they're all huddling around in their own small groups or couples or even singles, you know, and they, I'm sure, have their own dreams in their eyes, in their mind. They're surrounded with their own stories and they're into it and they're having tea and living that moment. और ये सारे जो नज़ारा है, मैं अपनी वो छोटी सी गाड़ी में बैठ के sipping my beer and having those sneaks, मैं देखता रहता था और enjoy करता था. And I was very happy about what was going on in me and in my life. तो ऐसे करते करते दिन चले गए एंड ऑब्वियसली दैट वाज नॉट इट, यू नो. नॉर्मली आई वुड ऑल्सो, जैसे मेरा बियर का जो इफेक्ट होना चालू होता था एंड दैट स्माइल वुड काइंड ऑफ सेटल इनटू माय फेस, I would then hit out to a nightclub. With my Maruti 800, I was a little high, you know, and I would kind of, and Delhi की सड़कें, खाली खाली सड़कें, winter is setting in, you know, it's a different atmosphere altogether. इतनी rush उस टाइम पे हुआ नहीं करता था, and there were not so many cars all around. Very few brands of vehicles were there, but there were vehicles, you know, and kind of drive through the streets of Delhi, outer ring road पकड़ो, कभी आप GK2 में चले जाओ, कभी आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चले जाओ, you know, कभी आप ड्राइव करते करते वसंत विहार में आ जाओ, अगेन ड्राइव करते करते धौला कुआं से आप कनॉट प्लेस चले जाओ, and so on. I mean, that was what life was all about for me. And in the process, go to numerous nightclubs, you know. वसंत विहार में कुछ नाइट क्लब्स थे, जिनमें से एक मेरा फेवरेट था RPM. There was one more called Barcode. नोएडा में Elevate was there and multiple others were there. Sector 18 market में जहाँ पे मैं जाता था. New Friends Colony में, of course, there was Pebble Street. अभी भी है. I recently went there when I went to Delhi. So that was there. I used to go then also, you know. I mean, this I'm talking about 2004. That's 18 years back, you know. Or Connaught Place, there were multiple. There was rodeos, there were the blues, there were Cuba. I used to go to all of them. कभी-कभी मैं पहाड़गंज भी चला जाता था. Shady. I used to like that Paharganj ka market. You know, it was very shady. It had those neons and it had those kind of, you know, the Soho wala feel. One of my blogs, if you see up, that's a link. जो Soho wala feel है, वैसा वाला फील मुझे पहाड़गंज में मिलता था, you know. So I used to walk and go to one of those shady pubs also post this evening session
एंड कभी कभी मैं गुड़गांव भी चला जाता था, ओडिसी एंड MGF मॉल के सामने जो एक और मॉल है, उनमें बड़े सारे नाइट क्लब्स थे. And then finally by around 1 o'clock or 2 o'clock in the night, I will come back home. So that's how it end my day out there in Delhi, in those days. तो ऐसे करते करते I came across, got in touch with an old friend of mine, जो मेरे म्यूज़िक टीचर थे स्कूल में, उनका बेटा है. Very close friend of mine when I was in school, and then we got in touch back again. And then हमारा मुलाकात होने लग गया, हम मिलने लग गए again. He used to live in Patparganj, which was the extreme other end. So I was in West Delhi and he was in East Delhi. So sometimes he would come down to West Delhi to meet me, and sometimes I would go down to meet him. Most of the times I would go down because I was a driving freak and I used to love to travel around. कोई expectations future के लिए saving में इतना मेरे को उस टाइम पे था नहीं, तो ऐसे मुलाकातों में obviously when I used to go there, he would have his own Santro, I remember. और वो फिर बार वो Santro बन जाता था. तो हम लोग पटपड़गंज के सड़कों में ऐसे we used to drive around and have the same setup of the munchies between the seats and the bottles between our thighs, and used to drive around Patparganj as if we are driving around in the streets of Miami. Feeling तो वैसे ही था, but जगह थी पटपड़गंज. तो ऐसे करते करते एक दिन he introduced me to a friend of his, and she used to live the apartment opposite to his. And incidentally वो मेरी स्कूल में मेरे जूनियर थी. I mean, this guy, me, we are in the same school, and this girl also incidentally was in the same school, but मेरे से 4-5 साल जूनियर थी. And we got along well. हम तीनों खूब मिलने लग गए. We three used to party, drink around, कभी इसके घर में कभी उसके घर में, of course when the parents are not there, and और कभी हम लोग गाड़ी में ऐसे घूमते थे. And it was a great time, and slowly one day she expressed her liking or fondness for me. प्रपोज उसने कर दिया मेरे को. एक बार हम लोग हाउस पार्टी कर रहे थे उस टाइम पे, और ये अरेंजमेंट भी मेरे दोस्त ने किया था, बिकॉज दैट गर्ल हैड टोल्ड माई फ्रेंड दैट शी लाइक्स मी, सो प्लीज़ क्रिएट अ सिचुएशन वेयर शी कैन प्रपोज मी. तो उसने अपने घर में व्हेन ही टुक मी to his house with her, and we had a nice great party दारू में, and then where she proposed me. And I also said yes, I mean why not, she's a beautiful looking girl. I'm just 25 probably. अब 25, 26, 27 साल में थोड़ी कोई प्यार यार सेटल वेटल कोई सोचता है. I mean, are you mad? I was not crazy to think on settling and marrying at the age of 20. I have a life to live, yeah. So I made it very clear to her that, see boss, I mean, if you're thinking of that serious kind of a thing, this is not the gentleman for you. Yeah? I'm not keen on, I'm not even thinking about settling and anything before the age of 35, marriage, forget it. I mean, so if you're the other kind of, you're just looking for some fun and, having company, I'm game. So she was also game. She said, yeah, why not? I mean, you're right on your part. So I said, ठीक. So हम लोग ऐसे hang out करते रहे. We kept on hanging around. We kind of, met a lot, and then we were kind of seeing each other. She was a nice girl, and she was into music as well. So she would drink as well, and we would kind of drive around and have a good time together. I think August and September ऐसा कुछ महीना था. I was coming out of my office around 6 o'clock. I was expecting her call, which she did, and then she said, "Hi Neelav, how are you doing?" I said, "As good as usual, always good as usual." So she said, "I want you to speak to a friend of mine." मेरी उसको मैं छोटी सिस्टर जैसे मैं मानती हूँ. I said, "Oh really? Wow, I would love to speak to your little sister." And she said, वो मेरी कॉलेज में पढ़ती है, मेरी क्लास में है, and she's a little upset today. Do you want to speak to her? I said, "Of course, I'm game. I'm that's what I am. I mean, I'm such a helping, understanding guy. Why not? Please let me speak to that sister of yours." I said, "Wow, what a girlfriend. She's introducing me to new girls." So eventually, I and that new girl, her मुँह बोला sister, spoke, and we spoke for some time. मैंने अपना ठाई वाला इंग्लिश मारने की कोशिश की, and I thought I created an impression and all that, and I was very content.
फिर ऐसे ही करते करते 1-2 दिन चले गए एंड देन आई कॉल्ड माई गर्लफ्रेंड अप एंड आई सेड कि ओ आई एम कमिंग टुवर्ड्स फरीदाबाद टुडे एंड आई बी पासिंग योर कॉलेज. सो शी वाज स्टडीइंग इन ए कॉलेज इन बदरपुर बॉर्डर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी था, बंद हो गया अभी, एंड सो वाज हर सिस्टर. So my intent was not really to meet my girlfriend, but my intent was to meet my girlfriend's Mubola sister and want to kind of check her out. So she said, come. I know I'm bad. Okay. So she said, come. I said, ठीक है, मैं भी गया. So I met her, my girlfriend. गाड़ी को मैंने Maruti 800, my limousine को उसके यूनिवर्सिटी के सामने, गेट के सामने रोका. And then I called her. She came out, and along with her came a beautiful petite woman who was dressed in black jeans, very simple. I think sandals पहनी हुई थी, बहुत ही simple. And she was wearing a stole or a shawl, again very simple. No makeup, thankfully. And her hair was absolutely simply, I think नीचे flat गिरी हुई थी. No jewelries, no fashionable accessories on her hands or necks, or no lipstick, expensive ones, no great long nails, artificial claws with colors, nothing. Shoes were very simple, flat sandals, no Nikes and Adidases and I don't know, मुझे नाम भी नहीं आते. कोई expensive showy चीज़ नहीं थी उनके अंदर. And that's the first thing which I noticed. Just a very simple girl, with a bag, I think, साथ में थी, and she came along with her. And my girlfriend was, of course, she was full of, she was a brand. She had brand here, but she was branded everywhere. And then, of course, she introduced me to this girl, her Mubola sister, and I said कि fine, I'm going towards Faridabad. And मेरा कुछ 5-10 मिनट का काम है. If you girls are free, do you want to come for a ride? And then we'll have probably an ice cream or a sundae. My girlfriend said, yes, why not? Her Mubola sister hesitated. She said, no, आप दोनों जाओ. I don't want to. But then my girlfriend persuaded her, come on, be a sport, आ जाओ. First mistake my girlfriend did. Okay. So then her Mubola sister came and with me. She sat behind in the car and I was in the front. So we drove in our limousine, my limousine, and we drove down to Faridabad. मैंने काम ख़त्म किया. निरुलाज में हम लोग गए. निरुलाज में हम लोगों ने कुछ तो संडे लिया हम लोगों ने. I think it was a chocolate fudge for me. That's what I would normally have. And banana split for my girlfriend probably, and again probably similar to for her Mubola sister. काफ़ी टाइम चिट चैट किया and finally it was evening and we decided to head back to the college. We came back from Faridabad all the way to the college gate, and my girlfriend's mother was already there. Again, she was another piece of full brand and jewelry and makeup and accessories and hairs and everything which was available in the market. उन्होंने लगा के रखा था and she was looking very nice indeed. So I said, oh wow, like mother, like daughter. Great. Thank God I'm just 25. I'm not even thinking of marrying or settling. But then then I wished her mother, and then my girlfriend said, okay, I'll head up back home because I've got some concert or something like that tomorrow. Could you please drop my little sister if it is okay with you? I said, oh, of course, I will. I'm so chivalrous. Don't worry about her. She's under my care. Then my girlfriend left, and I asked this girl, her sister, that क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँगा. And if not, she said, no, it's okay, मैं चली जाऊँगी, buses मिलते हैं. I said, but it's already 6:30 and it was October 24th. The onset of winter was there. It was getting darker. And I said, lady, you are in Badarpur border and यहाँ से आप जहाँ पे जाना चाहते हो, आप कहाँ रहते हैं? She said, मैं डाबरी मोड़ से अंदर की तरफ रहता हूँ, towards द्वारका से. डाबरी मोड़, come on, we are family. मैं भी उधर ही रहता हूँ, West Delhi. I'll drop you down, man. She said no. I said, I insisted. I said, please don't worry.
आई माइट लुक वेरी बैड बट आई एम जेन्युइनली अ गुड मैन एट हार्ट. दिल से अच्छा हूँ, आप फिक्र ना करें. आप विंडो खोल के रखिए, वैसे ही खोल के रखिए, बिकॉज मेरे गाड़ी का एसी वैसे भी काम नहीं करता है. यू विल हैव टू लीव योर विंडोज ओपन, सो डोंट वरी. एंड ग्लासेस काले हैं, डजंट मैटर, यू कैन लीव द विंडोज ओपन. एंड शी ऑब्लाइज्ड. हम गाड़ी में बैठे. आई नो शी वॉज अनकम्फर्टेबल बट शी डिडंट हैव मच ऑफ अ चॉइस बिकॉज येस इट वॉज 6:37ish. डार्क हो रही थी एंड calls started pouring in from her house, so she hesitantly, reluctantly hopped into my car and we drove down. I played some music, but then for I mean, of course, I mean, I had a wide variety of music, and I think I played some old songs, Kishore Kumar song. We started chit-chatting and talking a little bit, and in that entire drive of an hour and a half, I figured out that this lady who was beside me was such a brilliant human being. She had no show off at all. Absolutely not into दिखावा. कोई artificial jewelries, कोई artificial मतलब ballooned दुनिया नहीं बना के रखी थी. She knew what she was. She knew what her expectations were and which were not high for life. उसकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे गोलगप्पे अच्छे लगते थे. Not really the burger kind of a thing. आइसक्रीम उसको डंडे वाली पसंद थी. Not the one which I kind of treated her with. And she was not into that fashionable, trendy kind of way. She was just a down to earth girl. And I was so happy to have her by my side. वो conversation जो उनके साथ मेरा हो रहा था with such a simple girl, I mean, that was kind of beyond all the high जो I had got from the beers and everything. It was so wonderful. And then finally we reached Dabri Moor. वहाँ पे 2 बड़े बड़े गार्बेज के बिन्स थे ग्रीन कलर के, एंड उनके सामने मैंने उनको ड्रॉप किया. And I said bye. And she also said bye, and then I drove off and she went to her home. While driving back home, I was thinking, wow, what a brilliant human being. In a place like Delhi, in today's times, she's so simple, she's so earthly, she's so nice to speak to. इतनी उनके अंदर तहजीब कह लीजिए, या इतनी उनके अंदर एक क्या बोलते हैं, मैनर्स कह लीजिए, द वे शी स्पीक्स, द टोन, everything is so natural and not artificial. Her likes, her dislikes were so grounded, and no fancy bags and no desire for having fancy bags or fancy brands or fancy places, nothing at all. I was like, wow, I would like to meet her again. So, son, that lady was the one whom I saw for the next 10 years before we got married in 2014. And then we have you as a child. And you were born in 2019, December. And that drive on 24th of October 2004 was the first time I'd ever met your mom, and that was the first ever drive that we did together. उसके बाद तो बहुत सारे कहानियाँ हैं, interesting ones, but वो आज नहीं, for some other day.